Hello students, good morning. I think I am audible and visible to you all. ପିଲାମାନେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ। ଆଜି ଅନାକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ GST, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ। GST ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆ ଭିତରେ OPSC ର क्वेश्चन ट्रेंड रे बहुत गुड़े चेंज आसी। आजिकल क्वेश्चन गुड़ा पचरा होची इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट करिकी। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहले आमे बुझंती पॉलिटी संगरे इकोनॉमी की मिसई दबा, पॉलिटी संगरे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को मिसई दबा। यही अप्रोच रो ट्रेंड चलची ओपीएससी रे। आज किंतु जो जीएसटी मु पढ़ाऊची एटा खाली ओपीएससी लगी पढ़ाऊनी, विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ ओडिशा रे होची, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एम मेकिंग ए डिस्कशन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी। पिला माने मु कहिली जीएसटी कहले आमे बुझंती कोन जे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी टा होची गोटे प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स। जदि आमे इंडिया रो टैक्स स्ट्रक्चर को देखिबा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीटा वे रे रेवेन्यू जनरेट करूची। गोटे होची डायरेक्ट टैक्स माध्यम रे, आउ गोटे होची इनडायरेक्ट टैक्स माध्यम रे। पिला माने डायरेक्ट टैक्स आउ इनडायरेक्ट टैक्स रो भीतर थिबा डिफरेंस तमे जानो ना नाही? मु देखुची तमे जो माने रिस्पोंड करूचो, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भीतर डिफरेंस जानिଛ ना नहीं? जनरली पिला मान को पचरा हेले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भीतर डिफरेंस, पिला माने कहती जो टैक्स टाको गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करे सेटा डायरेक्ट टैक्स, जोटा को गवर्नमेंट डायरेक्टली न करिकी इनडायरेक्टली कलेक्ट करे सेटा होची इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एमतिया एक्सप्लेन करिबा, that means the tax which is collected by the government directly, that is called direct tax. That is absolutely wrong. देखो पिला माने मु बुझे दोची आगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तापर हमें जीएसटी की जिबा। मने रखी था, डायरेक्ट टैक्स इज नॉन ट्रांसफरेबल। डायरेक्ट टैक्स इज नॉन ट्रांसफरेबल माने डायरेक्ट टैक्स टाको ट्रांसफर करी हबो नाही। ऑन द अदर हैंड indirect tax is transferable। indirect tax को ट्रांसफर करी हबो। मु एग्जांपल दे दोची, डायरेक्ट टैक्स हला इनकम टैक्स। पिला माने डायरेक्ट टैक्स रो एग्जांपल हला इनकम टैक्स। मु विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने पाठ पढौची। सपोज मु वर्ष को 10 लाख टंका रोजगार करूची, ताहले कोन हबो? जेहेतु पर्सनली मु इनकम करूची, तनो गवर्नमेंट मो ऊपर टैक्स इंपोज करिवो। से टैक्स टा मु काहा ऊपर को शिफ्ट करि परिबे नाही। आई कैन नॉट शिफ्ट माय टैक्स बर्डन अपन एनीबॉडी। धर तुमको मु पाठ पढ़े कि पैसा आदाय करछि इंस्टीट्यूट ऊपर को मु से टैक्स टा को ट्रांसफर करि परिबे नाही। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सो राइट इट डाउन। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स व्हिच इज नॉन ट्रांसफरेबल बाय नेचर, which cannot be shifted from one person to another person। पिला माने बुझी गला डायरेक्ट टैक्स कौन? डायरेक्ट टैक्स इज नॉन ट्रांसफरेबल बाय नेचर। टैक्स लायबिलिटी cannot be shifted from one person to another person, that is called direct tax। I think all of you are clear। पिला माने समस्ते बुझी गला डायरेक्ट टैक्स कौन? वर्तमान मु इनडायरेक्ट टैक्स को जीबी। इनडायरेक्ट टैक्स होची दैट कंपोनेंट ऑफ टैक्स which can be transferred from one person to another person, which can be transferred from one person to another person, that is called indirect tax। जोठी टैक्स लायबिलिटी टा जणे लोक पाखरु आउ जणे लोक पाखकु शिफ्ट करी हबो,
ट्रांसफर करी हबो सेटा होची तमर इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल मु कहूची जीएसटी इज एन बट जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी रो फुल फॉर्म हैला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एटा केमिति इनडायरेक्ट टैक्स मु कहूची जीएसटी देख मु वर्तमान सपोज गोटे इंस्टीट्यूट करिछि से इंस्टीट्यूट रे मु पाठ पढ़ाउछि इंस्टीट्यूट टा रजिस्टर्ड हेछि तेणु मु जेहेतु पिला मानकु सर्विस जोगाउछि पिला मानकु सर्विस जोगाउछि पिला माने मो इंस्टीट्यूट रे एडमिशन करके मते पेमेंट करूचंती तेणु जेहेतु मोर ऑर्गेनाइजेशन टा गोटे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट दैट इज जीएसटी। इनकम टैक्स अलगा मु देबी केते वर्ष को इनकम करूची किंतु ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु द ऑर्गेनाइजेशन रन बाय मी इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू माय स्टूडेंट्स obviously this organization is expected to pay a tax that is called goods and service tax because the organization itself is providing service। पिला माने बुझुच जेहेतु ऑर्गेनाइजेशन ता सर्विस प्रोवाइड करूची मु सेटा को शिफ्ट कर दे परिबी निजे न देई कि मु कोन करबी इंस्टीट्यूट रो गोटे एडमिशन फीस रखी देबी एडमिशन फीस जहा रखिली धर एडमिशन फीस रखी देली 10% ता ऊपर सर्विस टैक्स मु पिला पाखरु कलेक्ट कर देबी पिला पाखरु कलेक्ट कर देबी 18% मु कलेक्ट कर देली पिला पाखरु जे 10,000 हैला कोर्स फीस ताको 18% हेले 1,800 टंका हैला जीएसटी बा सर्विस टैक्स कोर्स फीस संगे सर्विस टैक्स को जोड़ी देली पिला पाखरु कलेक्ट करली गवर्नमेंट को देई देली। देखो एठी होची कोन organization निजे दो नाही सर्विस टैक्स rather organization is shifting the responsibility of collecting service tax from the student। That's the reason I told you indirect tax is a tax which is transferable by nature and direct tax is a tax which is non transferable by nature। पिला माने समस्ते बुझी गला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भीतर डिफरेंस समस्ते बुझी गला रिस्पोंड करो मु देखुची तमरा। अच्छा ऑल ऑफ यू आर क्लियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वर्तमान मु कहूची जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन आवर कंट्री फ्रॉम 1st July 2017। जीएसटी हला गोटे इनडायरेक्ट टैक्स जोटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1st July 2017 रे इंट्रोड्यूस कले जेहेतु 2017 जुलाई 1st रे एटा इंट्रोड्यूस हला obviously July 1st is regarded as GST day or July 1st of every year is celebrated as the GST day of our country। पिला माने देखो जीएसटी बिल टा बहुत समान नला पार्लियामेंट रे पास हे के आसिया पाए। I have remembered the year is 2000 while Prime Minister was Mr. Atal Bihari Vajpayee। Mr. Atal Bihari Vajpayee's government introduced GST bill in our parliament in 2000 but finally it came into effect in 2017 कारण बिल टा दीटा को गृह रे पास हैला राष्ट्रपति कर अनुमोदन पाइला तापरे जीएसटी टा देख मु एठी पॉलिटी संगे लिंक करके जीएसटी पढौची जीएसटी टा हमर फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट करूची कारण आ पूर्व बहुत गुडा इनडायरेक्ट टैक्स थिला से इनडायरेक्ट टैक्स को केते गुडा सेंटर कोन करूथला कलेक्ट करूथला केते गुडा को स्टेट कलेक्ट करूथला जेहेतु सेंटर और स्टेट उभय को कलेक्ट करथले इनडायरेक्ट टैक्स को तेनु जीएसटी केस रे हमर आसीगला कोन ना फेडरल कैरेक्टर अफेक्ट हला सेथि पाई मु कहिची पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लास रे आई हैव मेड अ डिटेल डिस्कशन दैट any amendment which is brought to Indian constitution which is affecting the federal character of our country, obviously in that case the bill will be passed in both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha। पिला माने टिके रहि जाओ ये म्युनिसिपलिटी गेट जा
पिला माने देख जेहेतु जीएसटी बिल आम देशर फेडराल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करथिला मु कहिछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्टेक्स्ट रे जो बिलटा फेडराल कैरेक्टर को अफेक्ट करे से बिल पास लगी 2/3 मेजोरिटी बोथ द हाउस रे दरकार लोकसभा और राज्यसभा रे अपार्ट फ्रॉम दैट हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर country's legislature half of the states of our country's legislature must ratify the bill तेनु जीएसटी बिल जो आसिला से बिलटा पास हैला एवं हाफ ऑफ द स्टेट ताकू रेटिफाई कले 2/3 मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा रे पास हैला एवं हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री ताकू रेटिफाई कले एवं सेटा हैला 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच came into effect from 1st July 2017 as I said you earlier. एटी क्वेश्चन पड़िबो जीएसटी राटिफाई करिया पाई को स्टेट प्रथमे जीएसटी के आम देश रे राटिफाई करथिला ऑब्वियसली द आंसर इज आसाम आसाम होची आम देशर प्रथम राज्य जे कि जीएसटी की राटिफाई करथिला जेहेतु जीएसटी वर्तमान राटिफाई हे गला obviously article 279A note it down article 279A हमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जोड़ा हला एवं जीएसटी को रखा हला हमर कंकरेंट लिस्ट रे कंकरेंट लिस्ट माने obviously state legislature can make a law related to it as well as central legislature that is parliament can make law related to it तापरे जीएसटी रो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मु कहि दउची को कंट्री पृथ्वी रे फर्स्ट जीएसटी अडॉप्ट करिथला आंसर होची फ्रांस फ्रांस रे जीएसटी अडॉप्ट हला 1954 मसीहा रे पिला माने आउ गोटे पॉइंट एथरे मु ऐड करूची जीएसटी रिलेटेड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन देख जेहेतु एटा आमे बिल पास करिकी एक्ट करूचंती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे प्रोविजन अछि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन देख जीएसटी गोटे टैक्सेशन सिस्टम तेणु से संविधान रो गोटे आर्टिकल के संगे लिंक्ड अछि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कौन सेटा से आर्टिकल टा होची 265 नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन मने रखिबो सेही प्रोविजन अनुसार जीएसटी बिल आनिया पई बाध्य करा गला एवं सेथि पाई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसरला परे आर्टिकल 279A जोड़ा हला 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागी हला ए सब जीएसटी रिलेटेड बैकग्राउंड मो कहिली वर्तमान हमें पळैबा टैक्सेशन सिस्टम केमिति हम देश रे टैक्सेशन सिस्टम चलीची पिला माने टैक्स को हमें ब्रॉडली दीटा भाग रे विभक्त करि परिबा टैक्स को हमें ब्रॉडली दीटा भाग रे विभक्त करि परिबा फर्स्ट होची डायरेक्ट टैक्स सेकंड होची इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स टा को हमें दी भाग रे विभक्त करि परिबा फर्स्ट होची डायरेक्ट टैक्स सेकंड होची इनडायरेक्ट टैक्स पिला माने टिके लिखि दियो खाता रे मु जे जानी नाही केमिति पेन टैब यूज करी हबो आई डोंट हैव एनी आईडिया ओके जस्ट मेक ए हेडिंग टैक्स make a bifurcated mark direct tax and indirect tax direct tax ro definition mu कहली non transferable by person non transferable by nature non transferable by nature and indirect tax is transferable by nature देख मु कहि देछि जीएसटी गोटे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आसिया पूर्व कौन कौन इनडायरेक्ट टैक्स थिला हम टिके जान जिबा ते लिखि दियो पॉइंट वाइज मैनर रे जीएसटी आसिया पूर्व इनडायरेक्ट टैक्स हिसाब रे हमर थिला सेल्स टैक्स एक्साइज टैक्स कस्टम्स ड्यूटी पिला माने एगुडा सब जानि छ ना नाही सेल्स टैक्स कोनसी जिंस बिक्री कले विक्रेता क्रेता पाखरु जहा जो टैक्स टा कलेक्ट करे सेल्स टैक्स एक्साइज टैक्स कोनसी प्रोडक्ट में तैयारी कले मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जो टैक्स दवा पय पड़े दैट इज एक्साइज टैक्स कस्टम्स टैक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड टैक्स जतले हमें कोनसी जिंस विदेश को रप्तानी करंती
बा विदेश रु आमदानी करती जो टैक्स दियंती सेटा कस्टम्स टैक्स। नेक्स्ट है भैट वैल्यू एडेड टैक्स। कौन सेटा गोटे रॉ मटेरियल आम किणिले ताकू कन्वर्ट ताकू रॉ मटेरियल को यूज करिकी आमे कौन कले फिनिश्ड गुड कले रॉ मटेरियल कॉस्ट आउ फिनिश्ड गुड रो प्राइस भीतर जो डिफरेंस रहिला दैट इज वैल्यू एडेड तापर जो टैक्स दिया हबो दैट इज वैट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स होची सर्विस टैक्स। कौन सर्विस टैक्स मु तुमको पाठ पढ़ाऊची सो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू सो आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट दैट इज सर्विस टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स। कौन एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा हॉल पिला मानकु लोक मानकु एंटरटेनमेंट दिए सिनेमा हॉल को एंटरटेनमेंट टैक्स देवा पई पड़े। एमतिया विभिन्न और बहुत गुडे टैक्स थिला मु सब को कहि पारनी सो एगुडा सब इनडायरेक्ट टैक्स। ए सब इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करिकी जो टैक्स टी आसिला सेटा भी गोटे इनडायरेक्ट टैक्स तार ना दिया हला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पिला माने समस्त बुझी गलो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन ता भीतर को मु जाइनी केवल मु कहूची गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स is a system of taxation introduced by government of India with an objective of maintaining uniformity in taxation system। सारा देश रे गोटे टैक्स आसीबा दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिंता कला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मु जीबी किंतु जिबा पूर्व आगे मु डायरेक्ट टैक्स पढ़ी दउची। डायरेक्ट टैक्स टा कहि सारला परे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीबी। डायरेक्ट टैक्स अंडर रे कोन कोन आसुची पिला माने पॉइंट इट डाउन नोट इट डाउन। फर्स्ट हला इनकम टैक्स। मु कहिची डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। direct tax is non transferable by nature। कौन डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट हला इनकम टैक्स। मु इनकम कर फॉर एग्जांपल मु जहा इनकम करूची तापरे मु गवर्नमेंट को टैक्स देबी मोर लगी आउ केही टैक्स देई परिबे। सेकंड होची कॉर्पोरेशन टैक्स। कौन कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट टैक्स गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि से ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को टैक्स दबो। धर कॉर्पोरेशन न मालिक मु प्राइवेट कॉर्पोरेशन मोर इनकम ऊपर मु इनकम टैक्स देबी किंतु कॉर्पोरेशन रो जोटा रोजगार होची सेटा मो इनकम बोल के धरा हबनी। कॉर्पोरेशन रो जहा प्रॉफिट हला सेटा को मु कॉर्पोरेशन टैक्स हिसाब रे गवर्नमेंट को देबी ता थ्रू किछि अमाउंट बुझे होची। नेक्स्ट होची वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स कौन वेल्थ टैक्स आजिका दिन नाही किंतु आगुर थिला मु कहि दोची। वेल्थ टैक्स अर्थ होची गोटे लोकर कार अच्छी बिल्डिंग अच्छी बहुत ज्वेलरीज अच्छी ये सब उपरे तार वेल्थ जहा तापरे ताको टैक्स दवा पे पड़िबो दैट इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स पिला माने। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स होची स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी कौन सेटा स्टेट ड्यूटी तमे जानिछ बापा पाखरो प्रॉपर्टी पुओ बा झियो पाखको आसुची आजिका दिन रे झियो पाखरो नाती नातुणी पाखक जाउची बुझी होची। जो इनहेरिटेंस होची गोटे जनरेशन नु प्रॉपर्टी आउ गोटे जनरेशन को से जनरेशन वाइज तो इनहेरिटेंस होची जो लोकटी इनहेरिटेंस सूत्र रे प्रॉपर्टी पाउची सी गवर्नमेंट को टैक्स दबो दैट इज कॉल्ड स्टेट ड्यूटी। समस्त बुझी गलो स्टेट ड्यूटी। लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज गिफ्ट टैक्स। पिला माने गिफ्ट टैक्स कोन जानिछ जेतबेले गिफ्ट टैक्स कथा उठे स्वतःप्रवृत्त भाव में दीटी लोक मन को आसती गिफ्ट किए क्या दिए आजिका दिन रे गिफ्ट आजिका दिन रे किए क्या दौची बुझी पार्थिव दी जन टू पर्सन्स द मोमेंट वी थिंक अबाउट गिफ्ट टू पर्सन्स कम टू आवर माइंड। दी जन लोक आम मन को आसती किए कहि परिबे से दी जन ये कहि परिबो दी जन किए आसती गिफ्ट टैक्स कथा कहले जने गिफ्ट गिवर आउ जने गिफ्ट टेकर गिफ्ट रिसीवर हाँ ना नहीं जने गिफ्ट गिवर जे गिफ्ट दौची आउ जने गिफ्ट रिसीवर। गिफ्ट गिवर इज कॉल्ड डोनर। गिफ्ट गिवर इज कॉल्ड डोनर DONOR
and gift receiver is called a donee, DONEE. Gift giver is called donor, receiver is called donee. ताहले किए दब टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स किए दब डोनर दब ना डोनी दब पिला माने गिफ्ट टैक्स रे गवर्नमेंट को टैक्स किए दब डोनर दब जे गिफ्ट देला से टैक्स दब ना जे पाइला से टैक्स दब हां माने रख गिफ्ट टैक्स रे जे गिफ्ट रिसीव करूची से टैक्स दब जे गिफ्ट दउची से टैक्स दबनी तम मन को क्वेश्चन आसो कहीं मत तो जने गिफ्ट देला मु कहीं टैक्स देबी मु ताको मागी छी तमे तो ताको मागी ना से तुमको स्वतःप्रवृत्त भाव देला तमे कहीं टैक्स दब न मागिले भी तमे कहीं रखिल तमे न रखिथिले टैक्स देबा पई पड़ न थांता तमे जे कहता नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बट रिसीव योर गिफ्ट यू वुड हैव बीन एग्जम्प्टेड हला टैक्स तुमको दबा पई पड़ी न थांता जदी तमे कहिथा तो मु गिफ्ट नेबिनी जेहेतु तुम गिफ्ट रिसीव करूच तेणु तुमको टैक्स दबा पड़ो दैट इज कॉल्ड गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स रो बहुत एग्जाम्पशन अच्छी फॉर एग्जांपल 50,000 टंका भितर गिफ्ट देले किछि गिफ्ट टैक्स दबा पड़ो नाही किंतु 50,000 एक जदि जने गिफ्ट रो वैल्यू हैला पूरा अमाउंट रे टैक्स दब इनकम टैक्स गिफ्ट टैक्स भितर डिफरेंस अच्छी इनकम टैक्स रे कोन अच्छी 2.5 लाख पर्यंत किसी टैक्स दबनी 2.5 लाख रु 5 लाख पर्यंत गोटे रेट रे टैक्स दब 5 लाख रु 10 लाख पर्यंत आ गोटे रेट रे दब किंतु गिफ्ट रे होची कोन पूरा होल टोटल वैल्यू ऊपर टैक्स दब किंतु मैरिज समय रे जो गिफ्ट मिले ता ऊपर टैक्स दबा पई पड़िबनी 50,000 कोन 50 कोटी हेले भी टैक्स दबा पई पड़िबनी मैरिज समय ता बाद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो गिफ्ट दिया जाए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेठी टैक्स पड़ेनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो गिफ्ट तमे रिसीव करिबो ता ऊपर भी तुमको टैक्स दवा पे पड़िबन तमे एमतिया सब गिफ्ट टैक्स अछि सो दीज आर सो वेदर इट इज इनकम टैक्स और इट इज कॉर्पोरेट टैक्स or it is wealth tax or it is state duty or it is gift tax, all these taxes are coming within the purview of direct tax. And of the indirect tax I cited lots of examples like sales tax, excise duty, customs duty, VAT, service tax, entertainment tax, toll tax, entry tax and lots of other. But what happened from 1st July 2017, all these indirect tax was replaced by a single tax that is called GST. पिला माने GST ए जो जते गुडे indirect tax थिला 1st July 2017 रु ताको सेटा रिप्लेस करछि ताको किए ना GST. Why GST? What is the objective of introducing GST on part of government of India? पिला माने गवर्नमेंट काहे की GST इंट्रोड्यूस कला GST इंट्रोड्यूस न होबा पूर्वरु कोन प्रॉब्लम हम टैक्सेशन सिस्टम रे थिला देखो कहि दउची GST इंट्रोड्यूस न होबा पूर्वरु टैक्स सब विभिन्न स्टेज रे कलेक्ट होथिला फॉर एग्जांपल मो कहिबी गोटे लोकटे फैक्ट्री करिछि फैक्ट्री लगी रॉ मटेरियल दरकार रॉ मटेरियल जेतबेले से किणुछि रॉ मटेरियल जेतबेले से किणुछि सेतबेले से टैक्स दउछि रॉ मटेरियल किणिला टैक्स देला रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड रे कन्वर्ट कला सेठी से पुनी वैट देला सेठी से देला कोन वैल्यू एडेड हे गला मैन्युफैक्चरिंग बेले देला कोन एक्साइज ड्यूटी देला तापर जतले बिक्री हला बड़े पुणी से कोन सेल्स टैक्स कलेक्ट करा हला तेनो देखो परचेजिंग रॉ मटेरियल टैक्स इज देयर मैन्युफैक्चरिंग द रॉ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड टैक्स इज देयर सेलिंग द फिनिश्ड गुड इन मार्केट टैक्स इज देयर तेनो जेहेतु विभिन्न स्टेज रे ईच एंड एवरी स्टेज रे टैक्स वाज इम्पोज्ड
eventually the price of commodity was increasing. पिला माने टिके तमे खाता रे लिखि दउथिबो मु जानिनी केमिति एठी पेन टैब यूज करी हबो मु सेटा जानिनी तंटे खाता रे लिखि दउथिबो ओके सो देखो फर्स्ट सेटा चित्र करी के लिखि दबो रॉ मटेरियल देयर इज टैक्स raw material is converted into finished good, there is tax. Finished good is sold in market, there is tax. So in every stage tax was imposed. Because of it the rate of the commodity was higher, the price of the commodity was higher. Apart from that tax was imposed upon tax. गोटे tax ऊपर पुणी आउ गोटे tax लगी जाउथला जोटा को हमें कहंती cascading effect. Economics रे कहा जाए cascading effect. That is a disadvantage of taxation system earlier. Cascading, CASCADING, cascading effect. That is tax on tax. जेहेतु tax ऊपर tax impose करा होथला, obviously price of the commodity was increasing. That was the disadvantage of our taxation system before the introduction of GST. कहीं की GST इंट्रोड्यूस हला तार फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हला एटा. सेकंड एक्सप्लेनेशन कौन? नॉन यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन मैकेनिज्म. सेकंड एक्सप्लेनेशन व्हाई GST was introduced. non uniformity in taxation mechanism. पिला माने लिखितला नॉन यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन मेकानिज्म. कौन सेटा नॉन यूनिफॉर्मिटी देख पिला माने मु कहिछि हैट कथा कहिछि वैल्यू एडेड टैक्स एटा गोटे स्टेट टैक्स. स्टेट टाको इंपोज कर देख भैट टा सब सारा देश रे गोटे रेट नथिला. भैट वैल्यू एडेड टैक्स दैट varied from state to state. तमे जानी थिबो GST पूर्वरु धर गोटे लोक ट्रक टे किनिया पई चाहिला से देखला ट्रक रो ऑन रोड हरियाणा रे ट्रक रेट जहा आंध्र प्रदेश रे ट्रक रेट से आनुहे. काहे कि कारण आंध्र प्रदेश रो भैट जहा हरियाणा रे भैट से आनुहे. बा गोटे कार किनिया पई लोकटे चाहिला पंजाब रे कार ऊपर जहा भैट लागुथला तमिलनाडु बा कर्नाटक रे सेया भैट लागु नथिला. बुझी होछि ना नाही? तेनु जेहेतु भैट टा डिफर करुथला स्टेट टू स्टेट all over the country, all over India, same rate of VAT was not imposed. That eventually contributed towards variation in the price of the commodity. Even said that contributed towards non-uniformity of taxation system, and that is another objective for which GST came into existence. बुझी होछि GST आसीबार उद्देश्य थिला how to maintain uniformity in taxation system. सेथि पई आमे कहू चंती GST context रे one nation one taxation. तार अर्थ बुझी गलो काहे के कहू होछि one nation one taxation. कारण सारा देश पई गोटिए टैक्स that is GST. देखो वर्तमान GST हला परे कौन चेंज आसिला आम टैक्सेशन सिस्टम रे. मु बुझौछि तमे टे चित्र करि दियो कारण मु पेन टैब यूज करि पाउनी ए जो क्लास रे. ओके देखो तमे रॉ मटेरियल लगी गोटे लेख बिफोर आफ्टर कर दबो. बिफोर GST गोटे एग्जांपल बिफोर GST लिखिबो आफ्टर GST लिखिबो. गोटे रॉ मटेरियल लेख RM रॉ मटेरियल right hand arrow mark दियो. raw material is converted into finished good FG. Then finished good right hand arrow mark दियो. That is sold in market. Finished good sold in market. पिला माने raw material is converted into finished good, then finished good is sold in the market.
रॉ मटेरियल ऊपर टैक्स लागिला रॉ मटेरियल को जे किनिला से टैक्स देला तन रॉ मटेरियल ऊपर लिखि दियो टैक्स हला फिनिश्ड गुड जेतले हला सेठी बसला टैक्स मार्केट रे जेतले बिक्री हला थर्ड पॉइंट सेठी भी बसला टैक्स तम तीन जगह टैक्स दिया दबा पे पड़ुथला टैक्स दबा पे पड़ले तीन जगह रेट ऑब्वियसली प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज इंक्रीजिंग तपर टैक्स ऑन टैक्स होथला दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट बुझी होची सेकंड पॉइंट लिखि दियो आफ्टर जीएसटी इंट्रोडक्शन हबा परे कोन हला जीएसटी हबा परे कोन हला लेख सेम चित्र कर रॉ मटेरियल आरएम राइट हैंड आरो मार्क दियो फिनिश्ड गुड रे पुनी गुड रो राइट हैंड आरो मार्क दियो सोल्ड इन मार्केट देख रॉ मटेरियल किनिला गोटे लोक बा गोटे कंपनी गोटे फार्म सेठी जीएसटी से देला लेख जीएसटी से देला फिनिश्ड गुड जो हला राइट हैंड आरो मार्च फिनिश्ड गुड हला फिनिश्ड गुड रे नो जीएसटी लेख फिनिश्ड गुड नो जीएसटी ता ऊपर लिखि दब तापर राइट हैंड आरो मार्क सोल्ड इन द मार्केट दैट इज जीएसटी देखे मु जदी करि पारुची टिके मु एक्सपेरिमेंट करूची लिखि परिबे कि नाही हाइलाइटर देखुची कने पेन टैप ता निहाती दरकार होची मु सेट जानिनी हाँ है गला पिला माने देख एबे मु कर दे परिबी चित्र तो मु कहि दोची देख एठी करिबा रॉ मटेरियल लेख रॉ मटेरियल कन्वर्टेड ए चित्र आरो मार्क दबो चित्ता जाओ अच्छा आरो मार्क दबो रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड तापर पुनी आरो मार्क दियो कन्वर्टेड इनटू ए सोल्ड इन मार्केट जीएसटी पूर्व आम कौन टैक्स दौले मुझे बर्तमान बुझे जाऊँगी जीएसटी पूर्व रॉ मटेरियल पाखे देला टैक्स लेख ऊपर रॉ मटेरियल ऊपर लेख टैक्स रॉ मटेरियल ऊपर टैक्स एठी टैक्स अच्छा बर्तन आफ्टर जीएसटी कौन है रॉ मटेरियल किनिला जला जीएसटी आफ्टर जीएसटी पर एठी जीएसटी दला लोकटे बा फार्मटे जीएसटी एठी नो जीएसटी एठी दला जीएसटी देख किंतु आउ गोटे प्रोविजन रहिला जीएसटी रे कहला इफ समथिंग इज परचेज्ड फॉर नॉन कंजप्शन पर्पस एठी देख से तो करूची जो रॉ मटेरियल किणुची नॉन से तार निज यूज लगी किणु नाही तेणु एठी कोन हबो तार जीएसटी टा रिफंड हे जिवो मने रख एठी जीएसटी प्रथमे दला बट इफ द रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर नॉन कंजप्शन पर्पस नॉन कंजप्शन से कंज्यूम करूनी ताले जीएसटी रिटर्न रिफंड ऑफ जीएसटी पिला माने तेणु सी जीएसटी रिफंड फाइल कर दबा ता माने आउ पड़िलानी पिला माने रॉ मटेरियल किनले ता माने पड़िलानी टैक्स फिनिश्ड गुड रे कन्वर्ट हला पड़िलानी टैक्स पड़िला कि पड़िला नाही वर्तमान से गला सेल कला बड़े जीएसटी दला तेणु देख गोटे स्टेज रे सेल स्टेज रे ही दउची टैक्स दैट इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पिला माने बुझी गला तापरे जीएसटी मेकानिज्म टा केमिति काम करूची मु कहि दउची टिके देखि दउची कोठी इरेजर अछि अच्छा देख बर्तमान जीएसटी टा लेख जीएसटी वन नेशन वन टैक्सेशन जीएसटी एठी कर दउची शॉर्टकट रे करूची जे तुम पेन टैप यूज करबा संगे एक्वेंटेड नुहे
ई सॉफ्टवेयर रे अच्छा लेख जीएसटी 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 की नहीं कि दी प्रकार ट्रांजैक्शन आसी परिबो देख विभिन्न जिनस तैयारी हल्ला परे जाय बिक्री हेले जीएसटी लागिबो तेनो बिक्रीटा जमी हम लेख से जो ट्रांजैक्शन टा होची जीएसटी के नहीं कि दी प्रकार ट्रांजैक्शन हम ये लेख इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एटा हला इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन केमती जीएसटी कलेक्शन हम कौन आम इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन कहले बुझंती देख जने किणिबो देयर इज समबडी हु इज बायर देयर इज अनदर पर्सन हु इज सेलर इफ द बायर एंड सेलर belong to the same state or if the buying and selling is taking place in the same state then it is called intrastate transaction पिला माने बुझी होची फॉर एग्जांपल गोटे जिंस कोन हला ओडिशा रे तैयारी हला जो कंपनी ओडिशा रे तैयारी कला से भी बिकिला ओडिशा रे किणकी ओडिशा रे तैयारी करके ओडिशा रे बिकिला हला कंपनी पाखरु जने किणथिला बायर हिसाब रे से पुनी ओडिशा भितर बिकिला तेनु बायर तो मु कहली नॉन कंजप्शन पर्पस रे जेहेतु किणीची प्रथम स्टेज रे जीएसटी जो दोइची से जीएसटी ता तार रिफंड हे जिवो अच्छा बर्तन ओडिशा रे बिका हला ओडिशा रे किणा हला एटा होची इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन रे जीएसटी मेकानिज्म अनुसार कोन हबो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ई जोटा हला एठी 12% मु आगु को पढेबी जीएसटी स्लैब पढेबी रेट पढेबी एठी 12% जीएसटी दबा पई पडियो 12% ए 12% ता कोन हबो इंट्रास्टेट रे दी भाग हे जिवो कोन लिखा हबो सीजीएसटी तापरे हबो एसजीएसटी सीजीएसटी रो अर्थ होची सेंट्रल जीएसटी एसजीएसटी अर्थ होची स्टेट एसजीटी जीएसटी स्टेट जीएसटी बुझी होची एटा 6% डिवीजन हे जिवो 6% ता माने कोन देख सेंटर को पळेला माने जोठी बिक्री हला सेही स्टेट किनिला ओडिसा रे बिक्री हिच माने ओडिसा सॉरी जोठी बिक्री हला सेठी जीएसटी कलेक्ट हला 12% जीएसटी ओडिसा रे तो बिक्री हिच ओडिसा कलेक्ट कला तारथु 6% पळेबो सेंटर पाखकु 6% पाख रहिबो ओडिसा पाखरे बुझियला इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पिला माने इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन बुझी गलो तापरे होची इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कोन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मु कहूची if the buyers and sellers lekha if the buyers and sellers belong to two different states if the buyers and sellers belong to two different states or if buying and selling is taking place in two different states then this type of transaction is called interstate transaction लिभे दोछि पेला माने सब पाई गली इरेजर God is great without knowing anything on the basis of a guess I could come to know how to use pen tap okay then I can write more also I'm very happy because I came to know how to use pen tap पिला माने लिखिलो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन if the buying and selling is taking place in two different states if the buying and selling is taking place in two different states then it is called interstate transaction ना मु एग्जांपल दे दउची धर गोटे जिंस ओडिसा रे कोन हला मैन्युफैक्चर हला
ओडिशा रे मैन्युफैक्चर है कि ओडिशा रे बिक्री हला some commodity was manufactured in Odisha and also sold out in Odisha. Sorry, sold Odisha रे मैन्युफैक्चर है कि ओडिशा रे जने किनिला ताकू बिकिला काहाकू आंध्र प्रदेश को बिकिला बा ताकू बिकिला महाराष्ट्र बा पंजाब हरियाणा को दैट इज कॉल्ड interstate transaction. That is called interstate transaction. ଏଇଠି interstate transaction ରେ କ'ଣ ହବ interstate transaction ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଯିବ that is IGST. IGST କ'ଣ IGST ଲେଖ integrated goods and service tax. IGST integrated goods and service tax. ए IGST टा केमिति डिवाइड हबो ना देख जो स्टेट रे बिक्री हेची सीए पाइबो एवं केंद्र सरकार पाइबे जो स्टेट रे बिक्री हेची कोठी बिक्री हेची देख पिला माने आंध्र प्रदेश की महाराष्ट्र रे बिक्री हेची आंध्र प्रदेश रे बिक्री हला आंध्र प्रदेश ता माने कलेक्ट करची जे जो स्टेट रे बिक्री हला से टैक्स कलेक्ट हबो आंध्र प्रदेश पाइबो सेंट्रल गवर्नमेंट पाइबो किंतु ओडिशा रे तयारी हेची ओडिशा पाइबनी ओडिशा रे तयारी हेची प्रोडक्ट बिक्री हला आंध्र प्रदेश टैक्स कलेक्ट कला से टैक्स रो गोटे पोर्शन आंध्र प्रदेश पाखे रहिबो आउ गोटे पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहिबो ओडिशा किछि पाइबनी बा जो स्टेट मैन्युफैक्चर करतला से किछि पाइबनी पिला माने तम मन रे प्रश्न आसुथिबो ता मान तो लॉस जो स्टेट मैन्युफैक्चर कला से काई करिवो से तो किछि टैक्स पाउनी तार टैक्स लॉस हला पिला माने मने रखि थाओ जो एटा सिना तार लॉस पुनी सेही स्टेट रे भी आउ किछि जिंस बिक्री होउची सेही स्टेट करी नाही अन्य स्टेट रे मैन्युफैक्चर हेची आंध्र रे तयारी हेतिवा जिंस ओडिसा रे बिक्री हबो हरियाणा रे तयारी हेतिवा जिंस ओडिसा रे बिक्री हबो पंजाब रे तयारी हेतिवा जिंस ओडिसा रे बिक्री हबो एबाटे फास्ट कंपेंसेशन हे जिवो जे सबु राज्य रे सबु जिंस तयारी हुएनी तेणु गोटे राज्य रे तयारी हे कि आर राज्य रे बिक्री हेले द्वितीय राज्यटी जेतेबेले पाउची टैक्स सेमती द्वितीय राज्य रे तयारी हेतिवा जिंस जेतेबेले प्रथम राज्य रे बिक्री हबो से राज्य भी तयारी न करी कि टैक्स पाइबो एटा हला फर्स्ट पॉइंट से बाटे किछि कंपेंसेट हबो द्वितीय कथा द्वितीय कंपेंसेशन रो ग्राउंड कोन हला जेबेठू जीएसटी लागिला 2017 मसीह सेंट्रल गवर्नमेंट कहिला नेक्स्ट 5 कंजुकेटिव इयर्स पाई स्टेट माने राज्य माने जहा तांकर लॉस करिवे रेवेन्यू लॉस टैक्सेशन को नहीं की ताकू कंपेंसेट करिवो केंद्र सरकार किंतु केंद्र सरकार कहला 5 वर्ष भितर तमे निजे डिवाइस करो डेवलप करो मेकानिज्म केमिति तमे टैक्स पाइबो किंतु 17 मसीह आरंभ करिकी 22 मसीहा पर्यंत जहा तमर लॉस होची ताकू सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेट करि दबो बुझी गलो ता माने एथरे किछि राज्य रो लॉस होउनी काना से सब राज्य रे सब जिंस हो नाही मैन्युफैक्चरिंग हो नाही तापरे द्वितीय कथा कहूची ए जो आईजीएसटी रे किए केते परसेंट पाइबो सेटा 50-50 नहे आईजीएसटी रे कोन की को राज्य केते पाइबो सेंट्रल गवर्नमेंट केते पाइबो ता पय गोटे काउंसिल अछि जीएसटी काउंसिल ए जीएसटी काउंसिल ता डिसाइड करिवो जो राज्य रे बिक्री हेची एवं केंद्र ए दी जनक भितरे को रेट रे से जीएसटी ता शेयर हबो सेटा निजे डिसाइड करिवो जीएसटी काउंसिल सेटा हे पारे 40-60 सेटा हे पारे 30-70 सेटा हे पारे 50-50 हला तेनो एटा हला तमरो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करियो कौन जीएसटी काउंसिल टिके लेखिनियो जीएसटी काउंसिल फर्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेकंड its headquarter is in Delhi. Its headquarter is in Delhi.
Its headquarter is in Delhi. Its headquarter is in Delhi. Third point, Union Finance Minister. Union Finance Minister is its chairman. Union Finance Minister is its chairman. तापर आउ कि यार मेंबर लेख यूनियन स्टेट मिनिस्टर. यूनियन स्टेट मिनिस्टर. यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू इज इट्स मेंबर. देख फाइनेंस मिनिस्टर है कैबिनेट रैंक मिनिस्टर सी है यार चेयरमैन. यूनियन रे सेंटर रे जो स्टेट मिनिस्ट्री अच्छी फाइनेंस तार जे मिनिस्टर अच्छा सी हूँ यार मेंबर. ता बाद नेक्स्ट पॉइंट लेख मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ. नेक्स्ट पॉइंट मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू. फाइनेंस और रेवेन्यू राज्य रे केते गुडे फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को होची को राज्य रे ताको फाइनेंस डिपार्टमेंट को होची. से मैं कहि दोची मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू ऑफ ऑल स्टेट्स. ऑफ ऑल स्टेट्स भारत वर्ष जते राज्य अछि केते 28 टा राज्य of all states are its member. Are its member. Are its member. ହେଲା ପିଲାମାନେ are its member. ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଗଲ. तेणु से जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करिवो कौन कौन शेयर हम आईजीएसटी केते प्रकार जीएसटी अच्छी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी बर्तमान सेटा डिस्कशन करूची. टाइप्स ऑफ जीएसटी लेख देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी. 4 प्रकार रो जीएसटी अच्छी आम देश रे. 4 टाइप्स. 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी कौन. फर्स्ट है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड होची सेकंड यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटोरी. यूनियन टेरिटोरी जीएसटी. थर्ड होची सेंट्रल जीएसटी दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी. आईजी इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी. तापरे फोर्थ सेंट्रल जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी पढ़े सारी. हाँ सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी इंटीग्रेटेड माने डिवाइड हम सेंटर और स्टेट भितर. तेणु 4 प्रकार जीएसटी रहा. एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी. एसजीएसटी है स्टेट जीएसटी. यूटीजीएसटी है यूनियन टेरिटोरी जीएसटी. आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सीजीएसटी है सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी. तापरे पळी आस रेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया. रेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया. रेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया लिभे दोछि. तापर लिखिबा लिभे दोछि. रेट ऑफ जीएसटी कि आमे एबे जिबा.
इंडिया रे पांचटा रेट रो जीएसटी अछि। 5 rates are there in our country related to GST. कौन पांचटा लेख। फर्स्ट होची 0%, फर्स्ट होची 0%, 0% जीएसटी, तापरे होची 5% जीएसटी, 5%, नेक्स्ट होची 12%, 12%, तापरे होची 18%, तापरे होची 28%, 28%, लास्ट होची 28%। पिला माने केते गुडा आइटम अच्छी जहाँ पर किसी जीएसटी लागू हो ना। जदि किसी जीएसटी लागू हो ना आम कहते जीएसटी 0% जीएसटी। पिला माने तमे कही पचारि कही परिवो जे सर कहीं सेटा 0% जीएसटी आम कहते न कहले कौन असुविधा अच्छी। 0% कह अर्थ तो दैट इज नॉन टैक्सेबल ना। तुम भाव मन को क्वेश्चन आसथिबो 0% डज नॉट 0% मीन्स इट इज नॉट टैक्सेबल। तुम भावुथिबो नाई पिला माने आजिका दिन में सेटा 0% अच्छी कि 0% आज सीना अच्छी आगु को चाहिए गवर्नमेंट तापर जीएसटी लगे पारिबो सेथिपाई आमे ताकू कहिबानी नॉन टैक्सेबल। 0% जीएसटी माने आजिका दिन में जीएसटी तापर कलेक्ट होनी किंतु इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन आल्सो कलेक्ट जीएसटी अपन इट। सेटा आगु को हे पारे जीएसटी 5% भीतर भी आसी पारे। पिला माने बुझी होची ना नाही सेथिपाई आमे पांचटा रेट रखिले जीएसटी रो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। आउ गोटे जिनस पिला माने मने रख 28% हला हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी एवं इंडिया होची पृथ्वीर एकमात्र देश जोटी हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी अच्छी। एई 28% पृथ्वीर अन्य कोनोसी देश रे एते परिमाण में जीएसटी लागू होनी। को आइटम पर 28% जीएसटी लागू होची ना कही दोची इंडिया रे अल्ट्रा लग्जरी आइटम, अल्ट्रा लग्जरी आइटम आपरे 28% जीएसटी लागू होची। पृथ्वीर कोनोसी देश रे एते परसेंट जीएसटी लागू होनी। कोटा अल्ट्रा लग्जरी आइटम तमे कहबो सर कार नहीं, कार टा को हमें अल्ट्रा लग्जरी आइटम कहि परिबानी काहे कि कार टा जने अल्टो कार किणुची, जने कौन मारुति 800 किणुची, एगुड़ा कौन अल्ट्रा एठी 28% लागिबो लागिबनी। जने ऑडी किणला, जने बीएमडब्ल्यू किणिला, बुझी होची ना नाही एगुड़ा अल्ट्रा लग्जरी आइटम रे जीवो सेही जगह रे 28% लागू हो। पिला माने समस्त क्लियर हो गलो अल्ट्रा लग्जरी आइटम रे ही केवल 28% लागे। एमती आ सब हमर 5 प्रकार जीएसटी अच्छी। आउ गोटे कथा मैं कहया पई चाहूची जीएसटी रे जीएसटी नंबर दिया हुए समस्त गोटे इंडिविजुअल को जीएसटी दिया हो। फॉर एग्जांपल मु अनअकैडमी रु पैसा पाउची, अनअकैडमी की मु सर्विस दोची तेणु मोर गोटे जीएसटी नंबर मु गवर्नमेंट रु अप्लाई करके पाइछि हैला। गोटे जीएसटी नंबर मु पाइछि से जीएसटी नंबर टा केते ना लेख। जीएसटी नंबर कंसिस्ट ऑफ 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड, 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड। पिला माने मु जो जीएसटी दउची सेटा आईजीएसटी रे जीवो काहे कारण अनअकैडमी रो हेडक्वार्टर अछि कर्नाटक रे बेंगलोर। मु पाठ पढ़ौची ओडिशा रे, मोर जीएसटी नंबर हला ओडिशा हैला। तेनो सेठी कोन होची ऑब्वियसली जेहेतु अनअकैडमी तरफ रु पढ़ौची हैला, अनअकैडमी सर्विस प्रोवाइड कला से हिसाब रे से जो मु आईजीएसटी दली से आईजीएसटी टा डिवाइड हबो कहा भितरे कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के भितरे। ओडिशा सरकार किछि पाइबनी मो जीएसटी रु बुझे होची। तेनो जीएसटी नंबर हला लेख इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड, 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड एवं गोटे ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी लगी ऑल ओवर वर्ल्ड अच्छी ता ना हला वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन लेख WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन
ये कौन करे ना गोटे जीएसटी रिलेटेड गोटे एस जीएसटी रिलेटेड गोटे HSN कोड डेवलप करछि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन HSN कोड डेवलप करछि कौन HSN कोड लेख हार्मोनाइज्ड सिस्टम harmonized system of nomenclature harmonized system of nomenclature harmonized system of nomenclature harmonized system of nomenclature it was developed by world customs organization को प्रोडक्ट उपरे जीएसटी बसिबो कहा पर बसिबनी ये सब जिंस को वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करिछि एवं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन तरफ गोटे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड आसुछि एचएसएन कोड केतेटा देश रे आजिका दिन रे जीएसटी लागू होछि तमे टिके देखि दबो लाटेस्ट जिंसटा मोर बोधवे 160 टा कंट्री मो श्योर नुहे तमे टिके देखि दबो 160 टा कंट्री वर्तमान पृथ्वी रे जीएसटी इंट्रोड्यूस करछंती इंडिया रे जो जीएसटी अछि एटा को आमे कहउछंती डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी इंडिया रे जो सिस्टम ऑफ जीएसटी अछि आको आमे कहउछंती डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी काहे कि आमे एटा को बरो करछंती कनाडियन मॉडल पिला माने मु कहिछि तुमको हमर जो फेडरेशन सिस्टम टा हला फेडरेशन सिस्टम हमर अछि हला तनो हमर फेडरल सिस्टम लागि सेंट्रल कोन फेडरेशन अर्थ मु बुझैछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिविजन ऑफ पावर जीएसटी की नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर जेहेतु आमे कंकरेंट लिस्ट रखिछंती स्टेट लेजिस्लेचर आपरे लॉ करि परिबो एवं सेंट्रल लेजिस्लेचर आपरे लॉ करि परिबो बुझियोछि वर्तमान जीएसटी रिलेटेड केतेटा क्वेश्चन मु कर दोछि जीएसटी रिलेटेड केतेटा बहुत सहज क्वेश्चन गुडा मु सेट करिछि कर दोछि से गुडा को सहज केते अच्छा देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी बहुत सहज क्वेश्चन करछि कारण एगुडा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लागि करिछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी ए रहला गुड्स एंड सप्लाई टैक्स बी रहला गुड्स एंड सेल टैक्स 3 रहला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डी रहला जनरल सेल्स टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स Second, the headquarter of GST Council is located at कोठी अछि कहि देछि तुमको न्यू दिल्ली मुंबई नोएडा रांची obviously न्यू दिल्ली is the answer what does I stand for IGST what does I international integrated national integrated कहिछि आंसर हला integrated Which state became the first state of India to ratify GST bill? Assam, Jharkhand, Bihar, Goa. Answer कहिछि Assam. In India, GST became effective from. In India, GST became effective from. GST केबेटु effective हला पिला माने केबेटु effective हला कहिछि 1st July 2017 तेनो 1st July की जीएसटी डे कुआ जाए Which of the following tax has been abolished by GST को टैक्स को जीएसटी abolish करिछि कॉर्पोरेशन टैक्स को करछि इनकम टैक्स को करछि वेल्थ को करछि करिनि कारण एगुडा सब डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेशन पढि दिछि आज एगुडा सब डायरेक्ट टैक्स को करि नाही इनडायरेक्ट टैक्स को करछि सर्विस टैक्स ता इनडायरेक्ट टैक्स थिला तेनो एटा को करछि आंसर हबो एटा सर्विस टैक्स What kind of tax is GST? कहिछि GST is an indirect tax. The chairman of GST Council in India. GST Council chairman किए कहिछि बेला माने एबे कहिछि Finance Minister, Union Finance Minister is the chairman. Who introduced GST
First in the world, first world पृथ्वी रे किए जीएसटी इंट्रोड्यूस करथिला को देश कहिछि फ्रांस करथिला who is called father of GST in India पिला माने जीएसटी रो फादर काहा को कहंती हाँ प्रियदर्शिनी लिखिछ सब सहज क्वेश्चन मु करछि जानि कि जेतु तुम अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी कहीं कारण तांका समय ही एटा बिल हिसाब रे इंट्रोड्यूस हेइथला सो आज एतिकी सरी जाइए जीएसटी रिलेटेड सब प्रकार डिस्कशन मु भाबुची तमर जीएसटी को लेकिन कौन प्रकार डाउट रही ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन ए वेरी एग्जॉस्टिव वे रिलेटेड टू जीएसटी इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ओके एंड as a matter of formal announcement I can say that students those who are interested to get enrolled in Unacademy can use my code that is Saroj 10. My code is Saroj 10. You can use my code and you get 10% discount in course fees. Okay, so this is all about today's class. Let me wind off my class for today. Thank you for watching today's class. Thanks a lot.